Good evening and namaste, everyone. I am very grateful to each one of you for your love and the showering of blessings that you have been showing us every single day. And this is one thing which I want to start this show with is faith consists in believing when it is beyond the power of reason to believe. A very strong line, difficult to understand, but let me just come back to you with this, that belief is a very strong word and powerful word which is filled with lot of emotions, and it is the only thing that keeps one motivated, especially to follow and to take decisions, challenging decisions, and to keep moving on achieving dreams in reality in one's life. To enable to be strong, to have that strong belief, one should back it with courage, and of course not only just courage but courage to take action. Now, I'm sure you're wondering why I'm discussing all of this, why I am chit chatting all of this, but well, it takes a lot to conceptualize your dream and idea with reality. And it takes a lot more than this when your dream, your reality is not exactly in sync with the society, the normalcy that we call. So I am absolutely elated and very happy to have Mrs. Vishakha Verma with us. And yes, she's a choreographer, but just not any choreographer. She's running her academy in UAE and has redefined the concept of dancers. So let me tell you, yes, she has completely redefined, and that's the very happiest moment for me that she's with me today. Thank you so much, ma'am. You are Thank here you. with me today. I mean, you have extended your academy to all those, people whom we can never imagine to have that ability to dance. You know, you have opened your heart, accepted these students from all different walks of life. They are differently abled. You are, they are maybe emotionally they are challenged. They, with that small intention of helping them and bringing that smile. I mean, I have seen your videos on Facebook, and the smile that these students of yours have when they are dancing and when they are participating with you, it's amazing. So you, I believe, to be an epitome of humanity, and we can all learn from you, ma'am. So I can immensely just thank you for joining me, and you know please tell us about yourself, your journey. I'm very excited to know, when did you start learning dance, and this academy of yours, plus this thought of having all of everybody involved in your academy. How? Okay. First of all, thank you, Tanushree, for having me, for giving me a chance, for accepting my work. It's a huge blessing when people like you, come forward to accept my work. The way I can feel it in your voice, I can feel it in your vibe. So that's all I'm working for. I want every place to become an inclusive place. So when I say inclusion means when we adjust, when we accept each and everybody with us together, that's an inclusive place. Let's not say, okay, my pinky finger is smaller, so it cannot stand with my next finger. But ring finger is very important, so this finger is not important. Let's stop this comparison. Can we have a tight fist of inclusion where we all come together? So, first of all, thank you so much for having me here. Now, you've asked some five, six questions where I started, how I began. So I'll not take much of everybody's time. I started learning dance through a chance, how everybody starts dancing during their school years. So I was a very, normal, probably a little more bubbly kind of a dancer in school, which attracted my teachers towards me. And one of them kind of told, why doesn't she pursue her Kathak? Why doesn't she learn some classical dancing? North India is not very well aware of dance as a dance. वहां Yeah, पे correct, डांस true. माने डांस अच्छा ठीक है टाइम पास के लिए कर लो
मतलब हाँ, हाँ, ऐसे मत जाओ, शादी के लिए not डांस as जरूरी a नहीं है। very normal life or a very career हाँ, oriented choice, not at all. नहीं 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 नहीं, नॉट एट ऑल। पैशन भी मत लाओ, पैशन भी मत लाओ। सीखना है वहीं सीखो, वहीं भूल के वापस आ जाओ। तो हम उस जमाने की बातें कर रहे हैं जब डांस wasn't so celebrated word. Dance used to be something called नाच, and नाच is not a very respectful word, you know और खैर जर्नी स्टार्ट हो गई, तब तक पता नहीं था व्हाट इज कथक। I was very blessed to be chosen to be a part of Kathak Kendra under Birju ji, under all my beautiful gurus, and I started my journey like a 7, 8 year old. जाती थी, नाचती थी, वापस आती थी। बट एक साल के अंदर अंदर समझ में आने लगा कि ये कुछ बहुत ब्यूटीफुल है। यू नो आई थिंक एवरी लिटिल गर्ल स्टार्ट्स हर ड्रीम, कि मुझे हेयर स्टाइलिस्ट बनना है, या मुझे मम्मा का लिपस्टिक लगाते लगाते उनको लगता है मैं मेकअप आर्टिस्ट बन जाऊंगी। पहले हम लोग ब्यूटिशियन बोला करते थे, अभी यू आर कॉल्ड अ मेकअप आर्टिस्ट। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑलमोस्ट 40 years ago. Okay, so and one day I came home and I told my parents that I think I want to become a dancer. So there was a big bomb blast in my house. My papa being from an army background, my mom being a teacher, a Sanskrit scholar. तो उनको ये समझ नहीं आया, उनके लिए तो वो भगवान वाली फीलिंग आ गई, हे भगवान किस नक्षत्र में इस बच्ची को पैदा किया टाइप्स, तो बहुत ड्रामा हो गया, तो बहुत सारी ब्राइबिंग स्टार्ट हो गई घर में। डांस छोड़ दो, कुछ और कर लो, कुछ और करेंगे, घूमने जाएंगे, केक खाएंगे, मैगी खाते हैं। तो हर तरफ से हुआ कि डांस को भूल जाओ। बट समवेयर उनको ऐसा लगा कि नहीं, डांस ये करना चाहती है। तो एक बहुत ब्यूटीफुल सी शर्त रखी गई मेरे सामने, सीख लेना, लेकिन कभी कहीं परफॉर्म करते मत दिखना। So I have never performed on stage for this reason, because my papa's wish is my wish, and I learned it so beautifully. I lived every moment with my gurus. I became a backstage helper to them. I wouldn't go, but I would just love it. Just love it. Of course, there must have been times when I must have felt कि लोग मेरे लिए तालियां क्यों नहीं बजा रहे। Obviously, this must have come, but I don't remember. I don't regret this moment of mine. And suddenly you come in grade 10, and the life's journey, especially a girl's journey, starts from the moment she reaches 15, 16. उसके बाद वो शादी की टेंशन हो जाती है सबको। तो बहुत एक डिस्कशन होते थे हमारे डिनर पे। उस टाइम डिनर नहीं होता, रोटी सब्जी खाने को उस टाइम डिनर मतलब उस पे हुआ करता था कि क्या बनना है। और जैसे ही पूछते थे वैसे ही मैं बोलती थी आई वांट टू बिकम अ डांसर। बस सब खाना वाना छोड़ के मेरे को साइड पे छोड़ के चले जाते थे। तो कहीं ना कहीं दिमाग में थोड़ा सा ये होने लगा कि क्या किया जाए अब, हाउ। सो 11th में साइंस लेना पड़ा, क्योंकि सबने हमारे घरों में साइंस ही लिया जाता है, आर्ट कॉमर्स को ऐसे नहीं माना जाता था, तो ले लिया। तो उसके बाद 12th के बाद अब क्या करोगी, तो हमने कहा कुछ बीकॉम कर लेते हैं, या ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स कर लेते हैं दिल्ली में। आई वांटेड टू स्टे इन दिल्ली। आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली। बट मेरे मम्मा पापा की बहुत उम्मीद थी कि शादी तो सिर्फ इंजीनियर और डॉक्टर्स की होती है अच्छे घरों में, तो मतलब अब तुम इंजीनियरिंग करो। अब इंजीनियरिंग तो कर लें, लेकिन अब दिल्ली में कौन मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज में देगा। आई एम नॉट सो गुड इन स्टडीज, बट I was very good in my debates, drama. I'm a scholarship holder from National School of Drama. I've done my Kathak. ये सब साइड चलता रहा। कोई बात नहीं, इंजीनियरिंग करने आज प्रॉबेबली तनुश्री आपको ऐसे लग रहा है, बट प्रॉबेबली आप मुझसे 30 साल पहले मिलती तो शायद आपको लगता अच्छा पढ़ाई क्या करी थी। अच्छा ये तो ठीक है, डांस किया, चलो तुम्हें सिलाई कढ़ाई भी आती है, खाना बनाना, पहले रिश्ते वाले ऐसे ही आते थे देखने, पढ़ाई क्या करी, मतलब उसके अलावा क्या किया। so,
इसके I लिए mean, I'm so sorry, but जब आप बोल रहे हैं ना ये सारी चीजें, it is like a flash to me when I am talking with my coaches या उनके parents. ये आप बोल रहे 30 साल पहले, ट्रस्ट मी ये आज भी है. हाँ मैडम, ये एक्टिंग तो कर लेगा, बट पढ़ाई का हाँ, क्या, करियर कहाँ पढ़ाई, है? यस So यस, I relate to that. and lot of us, especially women, I think ये जो गर्ल्स का एक इंडिपेंडेंस और उनको अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, तो अभी भी लोग सोचते हैं सिक्योर जॉब में जाना चाहिए. सिक्योरिटी कम्स, या तो बैंक में काम करो, या गवर्नमेंट टीचर बन जाओ, या गवर्नमेंट ऑफिस में कहीं काम करोगी तो सिक्योर्ड रहोगी. बट आर वी सिक्योर्ड? Okay, anyways, we'll come to that topic a little later. True. So engineering करने चले गए, और obviously with my marks I wouldn't get in computers or anything. So जो एकदम लास्ट होता है सिविल इंजीनियरिंग, उसमें हमको मिल गया. हमें बिल्कुल पता नहीं था सिविल इंजीनियरिंग में धूप में खड़ा होना पड़ता है, सड़कों को नापना पड़ता है, ईंट पत्थर के बारे में. अरे हम मतलब कलाकार लोग ये सब कहाँ जानते हैं. तो उसमें भी आई रिमेम्बर माई प्रोफेसर्स यूज टू टॉक जोक लॉट अबाउट कि अगर विशाखा को कभी रोड बनानी दी ना तो सारी रोड्स ऐसे ही बनेगी, क्योंकि इसका हर काम ऐसे होता है. इसका इसका हर काम ये है. बहुत बड़ा एक जोक होता था. तो हम तो सबके ऐसे बोलते थे कि प्लीज पास हो जाए, ताकि जो पापा की एक टेंशन है कि शादी हो जाए इस लड़की की, वो हो जाए, उसके बाद देखेंगे. तो कहीं ना कहीं कथक टुक अ ब्रेक फॉर 6 years, एंड हो गई इंजीनियरिंग, हो गई. वापस आते ही, जब तक वापस आते रिश्ता ऑलरेडी दे चुके थे, शादी ऑलमोस्ट डन थी, 3 महीने में शादी हो गई. तो शादी कर ली हमने, क्योंकि एक होता है कि पापा का बहुत, मम्मा पापा का एक मान रखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है. उन्होंने बहुत अरमानों से एक चीज की होती है, तो उन्हें थोड़ा वक्त लगता है समझाने में. तो या तो कोई ठोकर आए तो समझे, या ऊपर वाला कुछ बत्ती जला. आपका वॉइस बंद हो गया है. या सॉरी हाँ. सॉरी सॉरी सॉरी. No, 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 it's So, okay. anyways, we got married, and the best blessing of my marriage, which I started the first moment I met my husband, he accepted me as a dancer, not as an engineer. Wow. He was so amazed when he spoke to me, and he told, did I lose you? Are you No, there? no, no, no. Yeah, yeah, I'm there. I'm Yeah? there. Okay. So he was so amazed कि तुम क्या क्या करती हो. तो आई वॉज लाइक ये बंदा सही है यार, इससे शादी कर लो, बाद में देख लेंगे. तो माँ बाप को नहीं पता Wow. था कि पति ने मुझे मतलब मुझसे कहा गया था कि उसको बिल्कुल मत बताना तुम मतलब डांस में इंटरेस्टेड हो, उसमें ये इंटरेस्टेड हो, वो. हमने तो मतलब एज यू से एन आर्टिस्ट इज ऑल वेरी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज हम लोग ना छुपा नहीं पाते चेहरे से. नहीं पाते हैं. हाँ, It's all वो there. इट जस्ट कम्स आउट. तो हमने जब बताया तो उन्हें बहुत अच्छा लगा ये सुन के. शादी हो गई. शादी के बाद घर वालों ने भी बहुत एक्सेप्ट किया. बट ऑफ कोर्स यू गो थ्रू अ लिटिल मोर डिफिकल्टीज एज अ बहू, कि अच्छा डांस तो कर लोगी, लेकिन और क्या. बाकी क्या? हाँ, मतलब कल को बच्चे होंगे तो मतलब बच्चे स्कूल में जाके क्या बोलेंगे, मेरी माँ डांसर है. तो हम बहुत बोलते थे हाँ, बहुत अच्छी बात है, बोलेंगे डांसर है तो. मतलब बहुत कम माएँ होती हैं जो डांसर होती है, राइट. खाना वाना तो सभी बना लेते हैं. आई एम सॉरी टू से, बट आई वाज वेरी बैड एट कुकिंग आल्सो. लेकिन बट यही एक्सपेक्ट किया जाता है. तो हमने कहा कि तो वहां भी थोड़ा सा तालमेल नहीं बैठ रहा था. Clashes. हाँ, थोड़ा सा. तो वी हैड अ लिटिल रफ मोमेंट्स फॉर अ ईयर एंड अ हाफ. बट उनको भी वहां समझ में आ गया. लाइक माई मदर इन लॉ इज अमेजिंग, माई फादर इन लॉ वॉज वेरी अमेजिंग. ही यूज टू रिस्पेक्ट मी फॉर वॉट आई वॉन्ट टू डू इन माई लाइफ एंड आई एम सो पैशनेट अबाउट. सो ही वॉज वेरी फाइन कि नहीं नहीं विशाखा, तुमने जो करना है करो, लेकिन घर परिवार कहीं ना कहीं लगता है कि मेंटेन डांसर करके. बन गई तो, हाँ डांसर बन गई तो शायद घर बार भूल जाएगी.
वो बॉलीवुड की चकाचौंध में चली जाएगी। हर किसी को ना ये एक ये बहुत हाँ, बड़ा डर रहता है कि ये ना शोबिज में चली जाएगी, तो हमारे बेटे को शायद छोड़ देगी, फिर शायद बच्चा नहीं करेगी, तो ये एक डर रहता है। But I had my firstborn within, the first and a half year of my marriage because I really wanted to become a mother. So there were no, I had no doubt about it कि डांस ठीक है लेकिन ये भी बहुत जरूरी है। तो वहां से स्टार्ट हुआ मेरा करियर एज अ टीचर। I started teaching kids at home। और वो जो स्टूडेंट्स के साथ मुझे मजा आने लगा, समवेयर जब मेरे स्टूडेंट स्टेज पे जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी परछाई ऊपर जा रही है। एंड आई यूज्ड टू जस्ट पुट माय हार्ट एंड सोल इनटू टीचिंग कि ये बच्चा परफेक्ट होना चाहिए, जब वो जा रहा है ऊपर उसे ये करना चाहिए। So I think somewhere parents started loving me. Then I went into fashion industry. I was an event coordinator. I started training models. So when I used to see a model walking on a ramp, the way Vishakha Verma has taught it, मुझे लगता था yes, yes, I also walked an international stage, or I walked on a beautiful, wonderful stage. So somewhere that fulfillment was always there. But then family grows, you take a break. I started learning Odissi. I learned ballet. I did a little bit of contemporary. सीखती बहुत हूँ, सीखती बहुत हूँ। मुझे सीखने का बहुत शौक है। और हर कुछ, जैसे आप अभी जैसे बात कर रहे हो, मुझे इतना अच्छा लग रहा है, द वे यू केप्ट योर माउथ, इट्स सो ब्यूटीफुल। आई वुड लव टू लर्न इट, बट मेरा मुंह थोड़ा ज्यादा ही ओपन क्लोज होता है। But I just love it. I love the way people are. I'm very aware of what's happening. And after many years of up down, somewhere ऐसा लगने लगा कि जिंदगी को मायने सा नहीं मिल रहा है, once you cross your 30, 35, you start feeling कि क्या किया है? I mean, where are you? What are you doing? You know? हाँ ठीक है, बच्चे हैं। I have got 2 kids. My son is 26. My daughter is 20. So एक लेवल के बाद लगने लगता है कि where is Vishakha? What am I doing in dance? वही 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 आते थे, यही सिखाते जा रही हूँ। And I'm just making clones. It's just same repetitive. And then I took a break. I took a major 2.5 years break कि कुछ different करना है. And that's when I started working with few NGOs. And though I never came in contact with directly with these students, but I thought कुछ ना, I don't know if it's right to say, but कुछ ना charitable करना चाहिए, out of your love, out of your feelings, not for money, not for anything else, but I would love to go home, go to old age homes, read some stories, or go to, sit in a cancer ward and talk to these kids and do something. But disha nahi mil rahi thi. And that is when we came to Mumbai. So all my career stopped because to Dubai. So all my career stopped because the moment you come to Gulf, they do not take any experience from whatsoever from India. past So experience. you have to start from scratch. You have to prove yourself again that you have done this, you have done this. Because यहाँ पे उन दिनों में ये था कि गल्फ का एक्सपीरियंस कितना है। तो आई वाज लाइक गल्फ में भी तो इंडियंस वही लोग हैं। I mean, वही लोग हैं, कुछ difference नहीं है, but of course you cannot keep fighting with the officials. And it so happened that I started working in a beautiful school here. It was a CBSE school, an Indian CBSE school, and I was the dance coordinator for them. And I started my journey. Within 6 months, I was invited to watch a beautiful concert done by specially abled kids. तो हम चले गए, सुंदर सुंदर साड़ी वाड़ी पहन के चले गए
कि चलो देख के आते हैं। लेकिन वहां बैठे बैठे तनुश्री ऐसा लगा कि ये बच्चे और भी कुछ कर सकते हैं। ये सिर्फ आ रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, जा रहे हैं। सो व्हाई आरंट वी डूइंग समथिंग एल्स, यू नो? जैसे आप एक छोटा सा पौधा लगाते हो, बढ़ नहीं रहा होता तो आप उसमें थोड़ा सा फर्टिलाइजर डालते हो, थोड़ा सा ये पानी डालते हो, उसको धूप से बचाते, बिकॉज यू वांट इट टू ग्रो, यू नो? सो सेम एज अ टीचर. So in that concert, after the concert finished, I had this opportunity to speak to the principal of that school. And I gave her my reference, my this thing that I am this. And I just wanted to ask a question that why these kids didn't dance. So she said, of course, Vishakha, they were dancing. I said, no. Matlab, aise, no. Why? They could have done, a couple of more steps or moved around. No, 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 no. That's the best they do. So I was like, nahi. No, I'm like that. Nahi. Kuch, kuch hai. So she said, yes, Vishakha, maybe they can, but who will teach them? We don't have a dance teacher. So I said, I mean, there are so many teachers, who would willingly try to come and do that. I said, no. She said, no, Vishakha, nobody wants to come because they need a lot of patience, they need a lot of time, they need a lot of acceptance, and moreover, uh, all these schools run on some charity. So they don't have that much of finances to have a extra teacher. A dance teacher is an extra teacher. She is not the mainstream teacher. Mainstream is maths or science. Dance तो मतलब क्या है? YouTube लगा लो, सीख लोगे, है ना? तो हाँ, तो मतलब उस mentality, उस thought process. Anyways, I told her I would love to teach, and she also said yes. Probably she must be thinking कल नहीं आएगी, आज हाँ हाँ बोल के गई है. I came home with this thought, and Tanushree, I couldn't sleep. Next morning, when I went to my work, I spoke to my principal that I would love to start a program for these special ones in our school. And I would be doing it absolutely free of cost, free of everything. And I would manage everything. I was trying to kind of पटाओफाई, अच्छा मैं ये भी करूंगी, एक्स्ट्रा काम भी करूंगी, लेकिन मुझे इन बच्चों को थोड़ा सिखाने दो. And my of course, my boss was a little कि क्यों? Yeah. Why, Vishakha? Why do you want to do that? I said, I don't know, but these kids, I felt that they want me. So if you could just let me do it. I started my journey. I went for the first time. So there's this boy who is, if you call it hyper, there's this boy who doesn't talk, there's this girl who doesn't walk, there's another little girl who doesn't have any control on her movements. So there are these 6, 7 children. They look like a bunch of flowers. One is a rose, one is sunflower, one is a daisy, one is a lily, one is a tulip. But all of them had their own beauty and fragrance. Now, me being a very normal teacher, I would start like ek, do, teen, char, पाँच, छः, सात, आठ, right? Like that. अभी इनमें से सिर्फ एक को वो समझ में आ रहा है, और वो भी सिर्फ 2 मिनट के लिए. बाकी सब तो मेरा रिदम ही नहीं कैच कर पा रहे, बिकॉज किसी के लिए मैं फास्ट हूँ, किसी के लिए मैं स्लो हूँ, किसी को वो समझ ही नहीं आ रहा है हाउ टू रोल. आपके लिए और मेरे लिए बहुत इजी है ना करना, इनके लिए बहुत नहीं डिफिकल्ट है. है. इट्स वेरी डिफिकल्ट. So there my journey started as a dance therapist. I worked on myself. I studied about this. I took a little bit small courses here and there with whatever available time कि मैं कैसे इन बच्चों को समझ सकती हूँ. So this spectrum is a huge. There are a lot of names given to all my beautiful angels, but they're all just beautifully abled in their own ways. आप ऑटिज्म बोलो, एडीएचडी बोलो, सेरेब्रल पैल्सी बोलो, लर्निंग डिफिकल्टी बोलो, स्लो लर्नर बोलो, फास्ट लर्नर बोलो, मेरे लिए सारे इतने खूबसूरत है ये कि अपने अपने पेस में हर कोई बहुत खूबसूरती से करता है. एंड थ्रू डांस आई बिकेम अ वंडरफुल पर्सन. Through teaching them, I became a more humble,
more grounded person. And as I quote, dance is not about perfection of steps. Dance is about enjoying the journey with that rhythm. It's not about एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ. It's about एक तीन पाँच छः सात नौ एक. वही रिदम है, थोड़ा बदल दिया. I'm wearing a very mismatched साड़ी. Okay, मुझे ब्लाउज नहीं मिल रहा था. नहीं मिल रहा था, ठीक है? मिसमैच है. बट ठीक है. But beautiful. Yeah, correct, correct. So this is what inclusion I want to bring through my dance, through this world, through these kids. I want to give everybody a message that we are all beautiful in our own ways. Own ways. Stop comparing That's ourselves. beautifully, quoted, and the journey that you have stated. I mean, I'm sure the viewers, whoever watches this, somewhere or the other, they can definitely, I'm 100% sure, can relate with themselves, being there. Because I would separate myself from this a little bit, because I am blessed to have parents who have supported my choices, my journey, and they have really been with me. But I definitely have people whom I know have shared your experience in some or the other way. And this is so important that though today I believe dance has been accepted as a profession as well. So we see so many choreographers, and I see so many dance reality shows wherein people have accepted it, but still there is something which I feel people still can't come to that mentality that this can be a full-fledged, experience on its own. Profession. This could be a full-fledged profession on its own. And I don't know about the earning capacity, but yes, definitely. Why profession is because we want to do something. We want to have a name for ourselves, and this definitely gives you Yes, that. And I believe more right. than that. The holistical well-being, the holistical approach of satisfying happiness, or whatever you call it. I feel art forms of professions can actually give you that. So I would, on a very clear note, because see, being a career coach, I really want to talk about more experiences with careers and all. So you know as you rightly mentioned कि भाई उस जमाने में it was a very, I don't like to say this word, but नाच is was the term was being given. But वहां से डांस डांसर्स एक प्रोफेशन वो बना है. So according to you, आज के तारीख में अगर एक person who really intends to become somebody in this industry, and make a name, fame for himself, herself, or owning an academy also. So what in terms should they prepare themselves for? What all challenges, mindset, or career breakthroughs should they be aware of, or they should work on? First of all, be very passionate and be very, very clear that you really want to become a dancer or a dance teacher or a choreographer or just a motivational person. यहाँ पे ना हम लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं. हम स्टार्ट डांस से करते हैं, लेकिन उसके बाद हमको एक्टिंग करना है, उसके बाद हमको सीरियल में जाना है, फिर सीरियल से हमको मूवी स्टार बनना है. हम यहाँ ना जर्नी खो देते हैं. आजकल जितने बच्चों से मैं बात करती हूँ, मेरे साथ बहुत सारी नृत्यांगनाज जुड़ती हैं, बहुत सारे बात करते हैं हम लोग. तो वो आप सबसे पहले अगर उनसे पूछोगे ना डांसर बनना है, हाँ बनना है, क्या करोगे उसके बाद? ओ आई विश आई वॉज वर्किंग इन सच अ फिल्म. डांसर बन के फिल्म में क्यों काम करना है? Madhuri Dixit or anybody, I don't know if I'm supposed to quote an actress, they all came as an actress. Dance was their passion. So if we are talking about dance as a profession, so you have to be very, very clear क्या बनना है. और जैसे ही आप क्लैरिटी में आते हो ना, ऑटोमेटिकली
बहुत ब्यूटीफुल एक डायलॉग है, या ब्यूटीफुल किसी बड़े इंसान ने कहा है कि आप अगर शिद्दत से कुछ मांगते हो, कायनात भी आपके साथ होती है। लेकिन शिद्दत से एक ही चीज मांगनी है, 15 नहीं, क्योंकि कायनात भी कंफ्यूज हो जाती है ना, किसको दूं। Oh God, that's तो so उसके बाद wonderful. तो उसके बाद मतलब फिर क्या होगा, तो आप डांसर तो बने नहीं, तो आप फिर लास्ट में जाके बोलो हाय बड़ा मन था डांसर बनने का, तो किसने बोला था मूवीज में या मॉडल बनने के। ये हम ना बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। एक तो डांसर्स का ना खुद एक लीग होता है, क्योंकि हर आर्टिस्ट का, क्योंकि आई थिंक जो आप पेंट करते हो मैं कभी नहीं कर पाऊंगी, जैसा मैं डांस करती हूँ आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। और मैं कितना भी चाहूँ अपने गुरु के फुटस्टेप्स पे चलने की, फिर भी कहीं ना कहीं मेरी उसमें झलक आपको दिखेगी ही। और यही हर गुरु चाहता है कि उनका बेसिक हम में रहे, लेकिन हम खुद का फ्लावर ब्लूम हो जाए। सो एज सच देयर इज नो कंपटीशन, आई फील कि वो कॉम्पिटिटिव हो गए हैं। अरे यहाँ ये है, बहुत है ना, हर घर में एक कोरियोग्राफर है, हर घर में एक शेफ है, हर घर में एक आईटी प्रोफेशनल है, हर घर में एक बीवी है। तो क्या शादी नहीं होती लोगों की, होती है। you know so there's always an opportunity open, there's always a wide sky, but you have to find your path through your passion. तो सबसे पहले तो मैं सबको यही बोलूंगी, इफ यू आर पैशनेट अबाउट एनीथिंग, be it singing or be it talking, be it dancing, be consistent and be very very passionate, determined कि ये करना है, भटको मत। Don't keep shifting from here to there. Automatically see challenges किस में नहीं है तनुश्री, आजकल हर चीज में challenges है, every field. You know, my son is a cyber security engineer. You think he doesn't have a competition? जब उसने करी थी उस टाइम मुझे लगता था wow, that's the field. But the moment he joined his work, there were people who had done 15 years ago. You know, so there'll be always challenges. Keep your faith, क्योंकि faith से बड़ा और कुछ नहीं। That's all. Very और nice, बहुत very सारे very nicely put. मुझे मुझे वो टिपिकली हाँ, शायद पैसा बहुत नहीं है, पैसा बहुत नहीं है, बट सुकून बहुत है। सो अगेन I ये भी think चॉइस है, यू I वांट think मनी। Vishakha ji, हाँ the fact remains कि professionally in dance, which I have heard, there are so many groups जो लोग performance करते हैं, and we just come to know, अच्छा ये foreign में भी performance होता है, जी like when रेमो डिसूजा जी का जब शो स्टार्ट जी हुआ, जी, then we came to know कि भाई इतने सारे डांस फॉर्म्स होते हैं, राइट DID, these all dance shows when it comes, अच्छा ये भी होता है, अच्छा जिम्नास्टिक को भी डांस में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है, अच्छा करेक्ट डांस कैंप्स होते हैं, ओके यहाँ पे लोगों को पैसा मिलता है डांस करने के लिए, सो यू नो that started giving that vision कि भाई है, but विजन, still यस unfortunately people are not aware of it क्योंकि वो डील ही नहीं करते उस या चीज में। एंड यस फॉर दैट यस मैटर कितने सारे लोगों का ट्रूप है जो लोग ट्रूप परफॉर्मेंस करते हैं, इंटरनेशनली करते हैं, इन कंट्री करते हैं, एंड देर आर लाइक I can say vivid amount of audience who go and who watch these shows payment करके, वॉचेस तो या। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है, बट वी आर अनअवेयर ऑफ इट। सो डू यू फील दैट ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है लोगों में? एक्सेप्टेंस तो यस आई अंडरस्टैंड, बट अवेयरनेस ही नहीं है तो एक्सेप्टेंस कहाँ से आएगी? डोंट यू फील दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज? Correct. Absolutely. Absolutely. Again, awareness through what माध्यम? अभी अवेयरनेस में आप लोग सिर्फ एक ग्लैमर देखते हो, what everybody is watching, that beautiful dance which was put up in front of you for 1.5 minutes, वो 1.5 मिनट की कोरियोग्राफी के पीछे जो उन्होंने 32 आवर्स की मेहनत करी है, आर वी रेडी टू डू दैट तनुश्री?
यू नो हम लोग सब ग्लैमर देख रहे हैं। जब भी मेरे से बहुत लोग बात करते हैं, ओ यू आर अ डांसर, मतलब डांसर सारा दिन पार्लर में थोड़ी बैठा है। डांसर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैंने मुंह भी नहीं, कभी कभी हम मुंह भी नहीं धोते, फटाफट से ऐसे पहुंचते हैं, लिपस्टिक लगाई, बिंदी लगाई और चलो, so but people are only talking about glamour. Oh, that costume looked very nice. But for that costume, the way we control our diet, the way we do our fitness, is everybody ready to do it? You know? So ये बहुत बड़ा एक दोनों तरफ से सवाल है कि अवेयरनेस है। अब तो टचवुड आफ्टर दीज ब्यूटीफुल डांस शोज हम सबको एक पहचान मिली, हम भी एक करियर बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आई अर्न लेस और यू अर्न मोर और शी अर्न्स मोर और ही अर्न्स मोर, वो उतना ही है। बट हाउ ब्यूटिफुली आर यू विलिंग टू डू दैट? एंड एवरी करियर आस्क्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, डांसर्स की तो स्पेशली, क्योंकि बोलना भी है, करना भी है, दिखाना भी है और सुंदर भी लगना है। तो तो मेहनत से डर जाते हैं, मुझे लगता है यंग पीढ़ी जो है वो थोड़ा डर जाती है। उनको जैसे फेम नहीं मिलता ना, तो वो लोग सोचते हैं कि नहीं यार ये करियर अच्छा नहीं है। सो इट्स नॉट अबाउट फेम, इट्स अबाउट यू। यही मेरा नेक्स्ट सवाल था दैट मुझे आज कुछ बनना है, एंड आई डोंट से ओनली इन द डांसिंग करियर बट आई थिंक दिस इज इन एवरी करियर। सो एक एक बहुत ही क्या बोलेंगे उसको, एक फेरी टेल वाला एक वर्जन दिमाग में रहता है। अच्छा मैंने ये पढ़ाई की है, मुझे ये करियर मिलेगा, ऐसा जॉब रहेगा, या मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। एंड व्हेन यू एक्चुअली स्टार्ट दैट जर्नी इट ऑल शैटर्स। it I will not say for everybody एक but साल for में most टुकड़े of टुकड़े the होके matters. बिखर जाता है। So for any people who are facing such challenges with any career, dance bolo koi dusra profession bolo, so what do you feel, especially for dancers I will say here, what is it that they should keep in their mind to sustain this? एक प्रिपरेशन होनी चाहिए, एक माइंडसेट होना चाहिए, सो वो क्या एवरी होना चाहिए? टाइम, करेक्ट, every time your dream crashes, right? As you rightly said, make a new dream. Let that crash. Make a new dream. Let It's not that easy, crash. but it's not easy, वो क्रैश हो गया। It's very I easy if had you start dreaming. You don't dream. You start getting scared of dreaming कि ये वाला तो चॉकलेट तो मिली नहीं, ठीक है ना, अभी रात को 2 बजे you expect somebody to bring you a chocolate, ठीक है, so that was your dream. वैलेंटाइन मिडनाइट को कोई 12 बजे मेरे घर के बाहर फूल रख देगा, 1 साल नहीं रखे, अगली बार ये वैलेंटाइन ही बेकार होता है, ऐसे थोड़ी होता है। we stop dreaming, Tanushri. मुझे कहीं ना कहीं, if you talk about my life, you think my dreams didn't shatter after so many years? Now people are noticing who Vishaka Verma is. I don't know if I can reveal my age. I'm 48. I just turned 48. So do you think I should be getting fame now? Hello, no. 20 साल पहले मिलना चाहिए था, मैं ज्यादा खूबसूरत थी। But I learned it, and I really want to tell everybody, dream big and keep dreaming bigger. मैं आज भी ड्रीम करती हूँ कि tomorrow बहुत बड़ा ड्रीम है that Mr. Modi is going to call me and tell me, hello विशाखा वर्मा, कितना अच्छा लगा तुमसे मिलके, मुझे नाच सिखाओगी? तो क्या हो गया? I want तो to pray कि ये हो जाए। होएगा, होएगा तनुश्री, and I am going to send you a WhatsApp कि तनुश्री आई एम गोइंग टू मीट मिस्टर मोदी। क्यों नहीं? बड़ा ड्रीम, Awesome. बिग, शैटर ही तो होगा, शैटर होगा। शैटर कैसे होगा? मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे जब तक मैं किसी प्राइम मिनिस्टर से मिलूंगी, मैं किसी और से मिलूंगी।
बट वो होगा you know जरूर, 100% wow, होगा। I'm just thinking, usually मैं 30 minutes या 35 minutes तक का सेशन रखती हूँ ये वाला, but बहुत ज्यादा I टाइम हो just गया। can't stop talking to you. I just can't stop talking to you ने अभी बात करते करते इतनी सारी बातें हैं जो यहाँ पे it's like भंडार घर खुल रहा है यहाँ पे। I mean ये बहुत शॉर्ट टाइम हो गया। But no, I have to ask you this, you know प्लीज। जब आपने स्पेसिफिकली इन बच्चों को सिखाना शुरू किया था, जी। एक्सेप्टेंस मिलना बहुत मुश्किल हुआ होगा। करेक्ट। So how did you bring forth, I mean sure that time you realized that you really wanted to do this, today it is now your dream, your aim that आप इनके लिए इसको लेके आगे जाएंगी, but उस टाइम पे it was just कि वो एक flur of the moment था आपके मन में, जैसे आपने बोला it just राइट happened, you felt there is राइट so much more to be done with these kids. So राइट राइट। what was that struggle that you faced and how you managed to overcome it? It is very important for me to know. तनुश्री, आई स्टार्टेड टीचिंग दीज किड्स 15 years ago, और उस टाइम ये शब्द नहीं आता था मुझे डांस थेरेपी। मैं एक सिंपल डांस टीचर के जैसे ही जाती थी, एंड आई यूज्ड टू स्टार्ट ब्रेकिंग माय डांस स्टेप्स अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज एंड डू इट, सो इट स्टार्टेड इफेक्टिंग माय डांस। मुझे नॉर्मली डांस करना भूलना पड़ा, मैं स्पीड में नहीं जाने लगी, क्योंकि मुझे धीरे डांस करने की आदत हो गई थी, हर चीज को स्लोली लेने की, हर चीज को तोड़ मरोड़ के थोड़ा कुछ ब्यूटीफुल बनाने की। तो जो मैं एक ओरिजिनल, हम जो हमारे ब्रैकेट्स में होता है, आई स्टॉप आई स्टार्टेड लूजिंग दैट dancer in me. So somewhere people don't accept you very beautifully, because again, the moment I come back home, I have to come back to the normal people, right? अभी हम नॉर्मल, हम अपने आप को नॉर्मल बोलते हैं, जबकि मुझे लगता है हम बहुत क्रेजी लोग हैं, हम मोर क्रेजी हैं इन लोगों से। सच में मेरे एबल्ड बच्चे इतनी ब्यूटीफुली बातें सुनेंगे मेरी, या मुझसे कुछ सुनेंगे। ये जो यंगस्टर्स आते हैं ना, इधर फुदकते हैं उधर फुदकते हैं, पबजी हाथ में है, ये हाथ में है, वो डांस में तो ध्यान कम रहता है, बाकी चीजों में ज्यादा है। एंड देयर वर लॉट ऑफ पीपल हु स्टार्टेड टेलिंग मी कि अब ये इन लोगों को भी डांसर बनाएगी। I heard this from a lot of beautiful parents, क्योंकि they were not aware. See, again I'm saying, ये हमारी कुछ parenting voices हैं। I cannot blame my parents, I cannot blame anybody's parents, क्योंकि ये कुछ parenting voices होती है। सब डर जाते हैं कि अच्छा हमारे बच्चों का कोई करियर तो है नहीं, अब डांस करके ही पैसे कमाएंगे। So this became a different level कि पैसे कमाना is not the criteria first. First, I want that child to be that confident, moving his head and hands at the same way. क्योंकि हम किसी भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, there are grooming courses now. People actually go for Good grooming course. courses. Yes, yes. Good I course. heard it कि लोग एक्चुअली पहले जाके सीखते हैं, ऐसे नहीं बैठना है, ऐसे बैठना है, क्रॉस करके बैठा तो ऐसे हुआ। तो इन बच्चों को कौन समझाएगा? How do we prepare them? So डांस के माध्यम से, trust me, so many things started opening up which I didn't know, that they started improving in their physical appearances, the way they lift their hand, कितना उठाना है, ऐसे ऐसे करके बात होती है ना। कभी कभी जब हम बहुत हाइपर हो जाते हैं, तो समझ में आने लगा कि हाथ को थोड़ा ही हिलाना है, फिंगर्स पूरी खोलनी है। आपके लिए कितना आसान है ना तनुश्री, पूरे हाथ खोलना, इनके लिए बहुत मुश्किल है। They can't show one, they have to show Yeah. all five to be one. तो बहुत सारे challenges हैं, but it was just not dancing. It took a little while. It took a lot of parents who supported me, and finally, जब कोई एक छोटा सा मेरा पौधा बहुत खूबसूरत से ब्लूम करने लगा, तो और दो लोगों को इंस्पिरेशन मिला कि नहीं, ये डांसर नहीं बना रही है। डांसर के पास, डांस टीचर के पास बच्चे नहीं भेजते ना लोग कि अरे यार कल को शाखा वर्मा बन जाओगे।
तो मैं तो बोलती हूँ हाँ बहुत अच्छी बात है, बट उनको बहुत बुरा लगता है कि क्यों बनना है विशाखा वर्मा। तो आई डोंट नो व्हाट फियर्स डू दे हैव। तो ये स्पेशल बच्चों के साथ भी ऐसा ही होता है, क्योंकि उनके पेरेंट्स भी बहुत सारे सपने लेके बहुत कुछ करते हैं, बहुत सारी मेहनत करते हैं, और उनको भी लगता है कि नहीं डांसर तो नहीं बनाना, फिर क्या बनाना है। So somewhere now it's so beautiful that these अभी लोगों को समझ में आने लगा है that these kids are very good artistically, be it art, be it music, be it dance, be athletics. तो क्या हो गया अगर पढ़ाई में 50% ला रहा है तो it's fine, let him live. एक्सेप्टेंस अभी आने लगी है। अभी भी नहीं आ रही है तनुश्री, लेकिन कोशिश बहुत कर रही हूँ मैं, मेरे पेरेंट्स, मेरे नृत्यांगनाज और मेरे साथ जो भी जुड़े हैं, बहुत हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको अवेयरनेस एक्सेप्टेंस में बदल जाए। क्योंकि आप जैसे लोग जब एक्सेप्ट करने लगते हैं ना, तो ऐसा लगता है हम एक सोसाइटी में एडजस्ट हो गए हैं। अगर आपने एक वीडियो देख के एक्सेप्ट किया कि नहीं ये जो कर रही है बहुत ही, मतलब that's very inspirational. I mean, my cerebral palsy children cannot move their hands to here to here. अगर वो यहाँ से यहाँ लाके हर बीट पे कर रही है and with a smile, that means she is doing it from her heart. And if everything doesn't have to be turned into a profession, मैं बन गई क्योंकि मेरा कुछ पैशन स्ट्रांग होगा, बट डांस ऐसे भी तो सीखा जाता है यार, जरूरी थोड़ी वो डांसर ही बन जाएगा। तो खैर बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, एंड finances are very tight, time is too much, so you have to look into many things. But God has been very kind with me, Tanushri. I say thank you to Ma, that she has always guided, protected my path to what I do, and now I have almost 250 plus kids who are learning with me, and all free of cost. We don't charge. Our school is an inclusive school where I charge a normal kid or a normal mom or a normal father. But if he's a special angel, I mean, you pay for my special angel. It's like that. But that's fine. Wow. That's fine. This is a different institution I have started, and my inclusive classes are amazing. अमेजिंग। अभी ये वाले बच्चे भी थोड़ा फास्ट स्पीड पकड़ते हैं आपके साथ आके, और आप इनके चक्कर में थोड़ा ठहरना सीखते हो, तो दोनों का बेनिफिट हो रहा है मुझे तो। So I'm loving it. It was amazing talking to you. I know I have over exceeded my time limits, but I just couldn't stop myself. I mean, आपके पास से जो एकदम पॉजिटिव वाइब्स एंड द वे यू हैव पोर्ट्रेड ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, एज एन आर्टिस्ट वेयर डू यू वांट टू फोकस। यस, आर्ट फॉर्म्स बहुत सारे हैं, बट आपके आर्ट फॉर्म में देयर आर स्पेसिफिक एरियाज वेयर यू कैन ग्रो। Instead of messing it up, you focus and you grow in that particular zone and you will achieve your destiny. ये इतने ब्यूटिफुली आपने समझाया है, एक्सप्लेन किया है, अभी वो मेरे दिमाग में एज हो गया है कहीं ना कहीं। एंड थैंक यू सो मच विशाखा जी। आई एम श्योर I personally have taken a lot back from this session, and I am over excited to re work on my passions and goals again. So ये मेरे साथ तो definitely हुआ है, and I'm happy for it. So God I will bless not you. take time for my viewers from more, and I wish you all the Yes, best in your life. yes. And I hope we can Thank stay you. in touch apart from the show as well. Absolutely. 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 100%. God bless you, Tanushri. Thank you so much Thank for you so having me much. over, for listening to me and my Nrityanganas. And God bless you. Thank you. Thank you so much. Chalo, bye bye.